क्लियर नोट होमवर्क के लिए क्वेश्चन following data relates to product A and B. Following data relates to two products A and B. Product wise budgeted data, sorry, budgeted sales. Product wise budgeted sales A की है 18 लाख, ब्रैकेट में आगे लिख लिया रुपीज 30 पर यूनिट। तो जो मैंने ब्रैकेट में आगे लिखा है ये क्या होगा सेल प्राइस। बी 90 लाख 9 मिलियन और ब्रैकेट में लिख लिया रुपीज 50 पर यूनिट। Budgeted total fixed cost for the year. Budgeted total fixed cost for the year for 50,000. Contribution per unit A 10 और B 12, मतलब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। A 10 और B 12 रिक्वायर्ड है आप लोगों से फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस calculate break even sales units, calculate break even sales units and revenue if management wishes to maintain the ratio of quantities and sales revenue same as budget. एक आप लोगों का होमवर्क है जी मार्च 2015 क्वेश्चन नंबर 1 KPK डेयरीज लिमिटेड जो आप लोगों ने क्लास में ही किया था। अब आप इस काबिल हैं कि प्रोडक्ट वाइज उसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं C प्लस I प्लस और B प्लस। इनके आपको डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स ये सब कुछ दिए गए हैं। अब ये निकालने कैसे हैं या ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकलना है, इस डाटा को यूज करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और यहाँ से आने वाली फिक्स्ड कॉस्ट को आप सबको टोटल कर लेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपने प्रोडक्ट वाइज सॉल्व करना होगा। और इसके अंदर एक और चीज टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल्स, जैसे कि वो पहले नेट सेल्स वाला था तो वहाँ 2% कमीशन था, अब की बात 5% कमीशन, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर दोबारा टेस्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। फिर इसका पार्ट एक कंप्लीट हो जाएगा जो ब्रेक इवन पॉइंट का था, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी।